for liver. Now, cirrhosis is the most common factor for portal hypertension. Very important question. Very important बेटे. ठीक है. Next, in this you have to know ये पैथो में आ जाता है माइक्रोनोडुलर सिरहोसिस. डॉक्टर आयुष हाइपरटेंशन भी है. अब थे उसमें बेटा हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था. दिस वॉज अ क्वेश्चन आई थिंक आई डिस्कस्ड इन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये पास्ट ईयर का एक क्वेश्चन था. मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स, व्हाट इज ट्रू अबाउट इट. तो उसमें आई हैव गिवन यू प्रॉपर गाइडलाइन कि ये 5 पॉइंट्स होंगे, देन इट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स. ओके, जस्ट गो ओवर इट वंस. ओके, नेक्स्ट हाइपरटेंशन भी है राइट. प्री भी हो सकता है, प्री हाइपरटेंशन. ओके, अच्छा उसमें क्या होता है कि 3 out of 5 फुलफिल होने चाहिए. Not all the 5 should be present. 3 out of 5 if present, then it is your metabolic syndrome X. Okay. Micronodular is alcoholic and hemochromatosis. इन्हीं के उल्टे एक याद कर लो. Macronodular is NAFLD and Wilson's. If you learn one, the other side you can learn. ओके बेटे, ठीक है. ओके, नेक्स्ट आई थिंक दिस वॉज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि कंपनसेटेड क्या होता है क्या नहीं होता है. सो आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट. नाउ स्टिग्माटा में आपको क्या क्या याद रखना है. Number 1, paper money skin. The person who has cirrhosis will have paper money skin. Spider angiomatas will be there, and we will have palmar erythema. Very important. Why it occurs? Estrogen. We have jaundice. Then nails. 2 types of nails. Terry's nails and Muharke nails. Beta ये recent question है of the medical site. So just go over these nails once. Have a look on the Google. Okay. Terry's nails are ground glass appearance with no lunula. Right. They are seen in diabetes mellitus, CHF and malnutrition. Muharke nails are very beautiful nails. Right. They are like waves on the nails. Right. And they indicate hypoalbuminemia. So bete both Terry's and your Muharke nails, they have come in the recent exams. Just have a look. If I have the diagrams, I will show you. Otherwise, have a look by yourself. Okay? कि कौन से nails हैं ये? Nails में बेटे हमें 4 nails आएंगे. ठीक है? One is Terry's, one is Muharke's, the third one is spoon nails. है ना? Spoon nails आ जाएंगे. Next, they are the drumstick. Fine. Shamroth sign. So all these only 4-5 things आ जाएंगी. Clubbing आ जाएगा, IDA आ जाएगा, कोइलोनाइकिया आ जाएगा. Right. So please note only these 4 kind of nails can come to us. And 5th nail का Corrigan sign. ये सब आएगा बस. ठीक है? चलो, Corrigan sign कहाँ दिखता है हमें? क्या दिखता है हमें? Corrigan नहीं, सॉरी, क्विंके. देखो, क्विंके साइन कहाँ दिखता है हमें बेटे? कॉरिगन क्या होता है? कॉरिगन तो डांसिंग कैरोटिड होता है. क्विंके साइन इज ऑल्सो सीन इन द नेल बेड वेयर एओर्टिक रिगर्जिटेशन. अगेन आई एम रिपीटिंग, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, मिट्रल स्टेनोसिस, यही 2 आने हैं. यही 2 को अच्छे से कर लो. ओके. क्लबिंग आई थिंक आई हैव डन इन डिटेल. यस. हाँ डॉक्टर दीपेश, उसमें भी होता है. यस. क्लबिंग, CHF, CRF कहीं पे भी दिखता है. ओके. नेक्स्ट बेटा, डिपेट्रिन कॉन्ट्रैक्चर. दिस व्हेन द लिगामेंट इज थिकन्ड. ओके. दिस वी सी इन डायबिटीज mellitus and chronic liver disease. What is hysterexis? You will have a man sitting like this. Please watch me on the screen and doing like this. ना एक्शन कैसे बना होगा? हैंड बने होंगे, एरो होगा. राइट. कैसे बना होगा? लेट अस सी. कोई भी जज मत करना भाई. रात के कितना बज रहा है? डायग्राम. राइट. डायग्राम पे जज मत करना. ओके. दिस ईयर I am going to practice making beautiful diagrams. Okay. And with this Apple eye pen,
इससे नहीं बनते हैं. अदरवाइज ऑन अ पेन ऑन अ पेपर आई कैन ड्रॉ वेरी नाइस डायग्राम्स. ओके, सो ऐसे बना होगा बेटे डायग्राम. Fine. So what is this? This is asterixis. Bird flapping tremor we see in the chronic liver disease and hepatic encephalopathy. ठीक है. Fetal hepaticus is the smell smell which you get from a liver cirrhosis patient. Caput medusae, distended epigastric veins, they radiate from umbilicus or the paraumbilical veins are dilated. That is what is called caput medusae. And इसमें क्या होता है? It just resembles a woman who had all the hair like snakes. Fine. Okay. Okay. दिस क्वेश्चन बेटे अभी आ रहा है आजकल. अच्छा, एक मैं आपको व्हाट्सएप पे अभी दे दूंगी. हिपैटो पल्मनरी सिंड्रोम, राइट. इसका प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे याद दिला देना. आई विल गिव यू द 2 टाइप्स ऑफ द हिपैटो पल्मनरी सिंड्रोम्स. आता तो नहीं है, आना चाहिए भी नहीं, पर अब यही रह गया है हमारा लिवर में. ठीक है, तो आई जस्ट गिव यू अ व्हाट्सएप सो दैट यू जस्ट गो ओवर इट. टाइप 1 टाइप 2 में क्या होता है. फाइन. हिपैटोरीनल हिपैटोपल्मनरी में क्या होगा? रामू हैड परफेक्ट किडनीज. ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? उसका KFT दिया होगा, वो परफेक्ट होगा. बट ही हैड लिवर डिजीज बिकॉज ऑफ विच थोड़े दिनों बाद ही स्टार्टेड हैविंग हाई क्रिएटिनिन. So what is this? This is a hepatorenal syndrome. When the kidneys were absolutely normal, but now they are abnormal because of the liver. ठीक है, as such kidney was fine, but वो होता है ना दोस्ती यारी में एक साथ दोनों कूदेंगे, वो दोनों खराब हो जाते हैं. Here the lung was perfect, but liver की वजह से there is occurring problem in the lung. Fine. 2 scores पता होने चाहिए. चाइल्ड पग स्कोर, मेल्ट स्कोर, इसका याद कर लेना. राइट, वंस अ क्वेश्चन हैज कम ऑन दिस बेटे. ठीक है, कि चाइल्ड पग में व्हाट ऑल डू वी हैव, सो रिवाइज इट फ्रॉम योर नोट्स. ओके, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस एंड सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस. रिमेंबर ओनली दिस प्रूराइटिस है ना. खुजली होती है इन प्राइमरी, प्राइमरी pruritus. In the secondary, we have jaundice as or fever as a first symptom. In the primary biliary cirrhosis, we have pruritus as the first symptom. Fine. Next is hepatic encephalopathy. 2 questions will only come. There is a patient of liver cirrhosis. He or she has started sleeping ड्यूरिंग डे. सो बेटे स्लीपिंग ड्यूरिंग डे के 2 क्वेश्चन ही आएंगे. नंबर 1 विल डील विद OSA. So you will know obstructive sleep apnea. The second question will be in a liver disease patient. Liver disease patient में OSA नहीं होगा. Liver disease patient will always have hepatic encephalopathy, which is due to high ammonia, which might lead to mental confusion, slurry speech. Trail testing we do the constructional apraxia test, right? And asterixis we see. First symptom I told you, increased sleep, right? And what do we see? What do we treat it? This might come. We treat it with lactulose plus neomycin. ये दोनों याद होना चाहिए. Right, so lactulose and neomycin. So what happens? and ammonia जो होता है, it gets converted to NH4 plus, which is excreted by the kidney. Correct, Dr. Ayush. Correct. Very good. Okay. So bete, okay. See, this is a photo of a patient who has liver cirrhosis. Look at his skin. Paper money skin. Okay, this is spider nevi, right? This can occur at the chest, stomach, right? Abdomen. Okay, next, wait. Just give me 1 second.
Okay. In ascites बेटे, please go over ascites very well. ठीक है, ascites में you must go do everything very well. What is turbid, what is chylous, in chylous triglycerides are increased, we see it in the TTT, TB trauma tumor, है ना, and nephrotic syndrome. If it is black, pancreatitis, ये सब तो आता है आपको, है ना. क्वेश्चन क्या आता है, hemorrhagic में RBC becomes more than 10,000 per cubic mm. Right. Ultrasound के लिए we require minimum 100 ml of fluid. Paracentesis is a bedside procedure. Usually it is done on the left lower abdomen or quadrant because of the thin wall. And which artery is to be damaged because of this procedure? Inferior epigastric artery. Right. Treatment of ascites you must know. ठीक है, salt restriction, spironolactone, but spironolactone causes gynecomastia, so I use eplerenone. आता है ना ये सब. Then SBP, spontaneous bacterial peritonitis. First thing, paracentesis is not done. In this, there is a hospitalized patient who has repeated fever, right? And we are not able to find the cause of the fever. So what do? We did paracentesis little bit and we found that PMN is more than 250 per microliter. Then beta we say कि okay, now further paracentesis I will not do, otherwise sepsis फैल जाएगा पूरी body में, right? So what is the drug of choice? Pharmac question, cefotaxime. Now cefotaxime very important drug है, पढ़ लो उसे, ठीक है, please read it. Okay. SAG बेटा I have posted it on your groups also. SAG को एक बार देख लेना, एक बार देख लो, ठीक है, मे बी क्वेश्चन आ जाए, मे बी you know this is one of the question जो मुश्किल हो. So once you have done everything, SAAG serum albumin and ascites albumin gradient को एक बार देख लेना.